Hey, what's up, guys? Welcome back to my channel. So, today we are going to learn CTE, that is Common Table Expression. So, why do we use and when do we use CTE? So, whenever you have written a particular query and you want to store that query into a temporary table, that is when we use Common Table Expression. And why? When do we use it? When we need to do more analysis, we need to filter down more data. That is the time we use a CT. Rather than writing all the queries again, we will just store that query into a temporary table. So here, let's take a very basic example. So I do have an employee table over here. So I need to find out people who are having a salary more than let's say 1 lakh. So order by salary descending, sorry, where salary is greater than 1 lakh. I think so. Yep. So now I need to store this somewhere in a temporary table. So what I'll do here over here, I'll use a common table expression, that is CTE. So before the query, I will write like this with CTE as. You can name it anything with temp table as, and then we'll dump this query in that table. So now we'll run this first. We are getting this result. And what if we run this select star from temp tables? Even if we'll run this query, we'll get this same result. So rather than writing this query again and again, using the query again and again, we have stored that query in this temp table. You can name it anything. You can give it your name as well. That's not an issue. So let's take an example of finding the second highest salary. So there are three ways to find second highest salary. One is the offset method, which we discussed in the earlier videos. Then one, we have subquery. What if we need to find the third highest, fourth highest, or fifth highest salary? What would be the code? So for that, we will write CTE. So now to find the third highest salary, so we'll select, I believe, first name. We need the salary. We'll give a dense rank over. We'll do partition by first name. Now we'll do order by salary descending highest to lowest. We'll give this a name anything RK from our which table, employees table. So if we run this, ये हमारा salary 11111, oh sorry, मैं first name, let me bifurcate this, select star from employees. We can do this department wise, partition by. So if you see department wise, Alicia का highest salary है, that's why she is ranked one. Ethan उसके department में उसका highest salary रहेगा, and then so on and so forth. So now we need to find the third highest salary. So हम लोग अगर ये partition by भी अगर हटा देते हैं, will what we can do, drill this down is, हमें चाहिए एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, his salary, and उसके बाजू में हमको rank चाहिए. So we'll remove this partition by. Now we'll run this query. So अभी partition by हमने हटा दिया है. Oh, by I beg your pardon. So partition by will not use because it's already first name सब unique है. We don't have to group it. So Alicia is ranked one, Ethan two and three. So हमें third चाहिए. सो अभी हमें अगर यहाँ पर हम लोग वेयर कंडीशन लगाएंगे, देन ऑब्वियसली विल गेट एन एरर वेयर सैलरी, वेयर आर के इज ग्रेटर देन थ्री. और बाप रे, एस आर के हो गए. तो आर के इज ग्रेटर देन थ्री, देयर यू गो एरर, बिकॉज दिस इज द विंडो फंक्शन विच आर यूजिंग, यू वी कैन नॉट फिल्टर इट डाउन.
So that is the reason when we'll use CTE now with ranking as. तो एक मैंने temporary table बना दिया ranking. I have dumped this query in that ranking. So now what I'll do is select star from ranking where RK. So this is the result. RK था हमारा, where RK is equal to 3. So it will give me the result of the name who has the third highest salary. जिसका rank third है वो हमें it's not a select star. You can just write select first name and salary, and where RK is equal to 3, it will only give you first name and the salary. uh, Now you can play around with the data. 10th highest salary जब चाहिए तो there we go. Julia salary 81,000 and her rank is 10. So this is the way we used CTE. So what I did is इसको अगर मुझे सब क्वेरी में यूज करना तो मुझे 10 बार एक ही क्वेरी लिखना पड़ता था. तो दिस इज द गुड पार्ट ऑफ यूजिंग सीटीई. एक मैंने इसमें स्टोर कर दिया और उसको फिल्टर मैंने कर दिया. दैट्स इट. Now we'll see one more example. So find out each customer's most recent value. So whenever we need to find a recent value, we need to order by date. Let's see, select star from orders. सो कस्टमर आईडी के ऊपर, हाँ ठीक है, हम लोग कस्टमर नेम में भी ज्वाइन करना पड़ेगा कस्टमर्स के साथ. ओके. सो कस्टमर नेम एंड उसके बाजू में उसका रिसेंट ऑर्डर विल हैव टू फाइंड आउट. लेट्स सी. इसमें ज्वाइन डेट है नहीं, बट हम लोग को रिसेंट ऑर्डर वाला चाहिए. So there we go, order date. We need order date. So what we'll do is select what we need, c dot customer name comma o dot order date. Sorry, gap नहीं है. Order date from customer C join orders O on. What we have in common, I believe customer ID common रहेगा. Let's see. O dot customer ID is equal to C dot customer ID. Unknown column O dot customer ID may be, let me see कैसा है ये कॉलम. कस्टमर आईडी ऑर्डर्स टेबल में से सी डॉट कस्टमर नेम select star from customers. अरे यार, we have customer name. Okay, customer name, and then we have given orders, order date from customer C join orders O on O dot customer ID is equal to C dot customer ID. C dot customer ID O dot customer ID. क्वेरी तो बराबर है. अननोन कॉलम C dot customer ID on क्लब from customer C join orders O on O dot customer ID. सॉरी, यहाँ पर there we go. So this is the what we say, join किया हमने टेबल, और ये कस्टमर नेम है और उसका ऑर्डर डेट वगैरह ये सब है. So हमें अब इसका क्या करना था कि रिसेंट हम लोग को फाइंड आउट करने का था. So what we'll do is with कस्टमर रिसेंट नाम देते एज, और इस क्वेरी को इसमें डम कर देते. Now we'll do select what we can do over here is select customer name and order date from customer recent order by order date descending. So there we go. Daniel Lee 2026 8 इसका ये recent order ये था. We did order by order date, descending हो गया,
एंड नाउ डैनियल ली का एक ही ऑर्डर था, वो ये हो गया. विल सी इफ देर आर एनी डुप्लीकेट. सो इफ यू कैन सी ओलिविया ब्राउन 2026, इसका ये है ओलिविया ब्राउन, इसके दो ऑर्डर्स है. सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज अ विंडो फंक्शन ओवर हियर. सो हमने ये ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन हम लोग को सिर्फ उसका रिसेंट ऑर्डर्स आना चाहिए. वी डोंट वांट डुप्लीकेट. सो और कहीं पर है डुप्लीकेट इमा इमा विल्सन, यस. सो इसका भी रिसेंट चाहिए हमको और इसका भी रिसेंट चाहिए हमको. सो एक विंडो फंक्शन वी विल राइट ओवर हियर. कस्टमर नेम, कस्टमर नेम के अभी हम लोग सॉरी ये वाला कॉपी नहीं करना है. कस्टमर नेम. नाउ विल राइट अ विंडो फंक्शन ओवर हियर. विल यूज अ रो नंबर और एक हम सीटी बना देते. रिसेंट ऑर्डर्स करके. So whenever we need to use one more CTE, just write एक कॉमा डाल देंगे और एक विथ वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली रिसेंट ऑर्डर. फिर हम लोग सिलेक्ट कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, रो नंबर सेम ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट डिसेंडिंग बिकॉज हमको हाईएस्ट टू है. एज अगेन आर के फ्रॉम कस्टमर रिसेंट, ये भी एक हो गया क्लोज. Now what I'll do is select star from recent order. अभी ये इसमें चला गया कस्टमर रिसेंट में, बट अभी इसमें हम लोग ने उसको डम कर दिया. इसको मैंने एज नहीं लिखा. ठीक है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिसेंट ऑर्डर वेयर आर के इज इक्वल टू 1. आर के इज रो नंबर, यस. पार्टीशन बाय कस्टमर. देखो जो भी इसका रिसेंट ऑर्डर है वो हमें यहाँ पर अभी दिख रहा है. ओनली एक ही दिखेगा. इमा विल्सन जो हमको तभी आई गेस दो दिख रहे थे, अभी सिर्फ एक ही है. उसका रिसेंट ऑर्डर ही हमें दिख रहा है बिकॉज वी हैव डन ऑर्डर डेट डिसेंडिंग. सो दिस इज द वे वी कैन यूज अ चेन सिटी. चेन सिटी में क्या हो रहा है कि हमने एक सिटी इधर लिख दिया, हमने वो टेबल ज्वाइन कर दिए. नाउ अगेन वी हैड टू यूज अनदर विंडो फंक्शन और हमें इसको वापस से एक सिटी में डंप कर दिया सो दैट we'll get this result. Hope this was clear because CT thoda I guess easy hai if you practice a lot. Okay, the next one we have is highest salary rank within department. So पहले हमने दिया थर्ड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, बट यहाँ पर हम लोग को डिपार्टमेंट वाइज देखना है. सो विल with salary as select first name. Now we need the department. We need the salary. We'll use a dense rank over partition by department because department wise देखना है. Order by salary descending. इसको भी as R मैंने दे दिया. You can give it anything from employees table. ये हो गया, डम किया. If you run this, यहाँ तक मैं कॉपी करके रन करता हूँ. इफ़ यू सी आर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव एंड देन फाइनेंस में इसका फर्स्ट है, फाइनेंस में सेकंड है, फाइनेंस में थर्ड है, बट हम लोग को पर डिपार्टमेंट हम लोग को फर्स्ट ही चाहिए. सो व्हाट माय आंसर शुड बी अलीशिया एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी 210 है. इथिन का फाइनेंस में सबसे ज़्यादा सैलरी है एंड इन दोनों को स्किप होना चाहिए और डायरेक्टली फिर मार्केटिंग में इतना सैलरी है. दिस शुड बी माई पर डिपार्टमेंट वाइज आना चाहिए. So again select star from salary where sorry R is equal to 1. Order by salary descending. There we go. अलीशिया एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की सबसे टॉपर है, इथिन फाइनेंस डिपार्टमेंट का सबसे टॉपर है एंड बेन सेल्स डिपार्टमेंट का सबसे टॉपर है.
So this is the way we can find poor department wise by using partition by अगर मैं हटा दूँ तो normally the second highest third highest salary था वही हमें आंसर आ जाएगा. That's it for today, guys. Stay tuned for more such videos on SQL. Please like, subscribe, and share. Thank you. See you soon.